So our next topic is gingival enlargement. बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से. Gingival enlargement. We'll cover this topic today. It is very important topic and you'll get many questions from this. So gingival enlargement, everybody knows there is increase in the amount of collagen in the gingiva. That is why there is gingival enlargement, and how it occurs and what types of gingival enlargement we'll study. So gingival enlargement is first of all localized. Localized means one or more teeth, but not all the teeth, right? So it is called localized. Generalized means it is present in the entire mouth. So it is called generalized gingival enlargement. Then your marginal enlargement, which is which is present on the marginal gingiva, right? So that's why it is called as marginal gingivitis, marginal and enlargement, gingival enlargement. So it is present in the marginal gingiva, right? So next is your papillary gingival enlargement. It is present in interdental papilla. Then is your diffused gingival enlargement. Diffused means anywhere. That is present in marginal gingiva plus attached gingiva plus interdental papilla. Marginal gingiva, attached gingiva, interdental papilla. So it is called diffused gingival enlargement. And then is your discrete gingival enlargement, which is a tumor-like enlargement, right? So there are some degrees of gingival enlargement. How we will decide as it is that much of gingival enlargement, which is internationally acceptable degrees of gingival enlargement. So 0 degree means there is no gingival enlargement. 1 degree means it is present in interdental papilla. 2 degree means interdental papilla plus marginal gingiva. And 3 degree means it is present over more than 3/4 of the crown. That means it is इतनी हो चुकी है कि it is covering the 3/4 crown, right? Then is your classification. In classification, first is inflammatory enlargement. So what is inflammatory enlargement? Inflammatory means when there is an inflammation present. So it is of two types, chronic and acute. Right. In the chronic, there is no pain. In the acute, there is pain. If there is chronic enlargement, that is a red gingiva which bleeds on even slight stimulus. In the acute gingiva, when there is patient comes to you with the pain symptoms, it is called acute inflammatory enlargement, right? Then second type is your drug-induced gingival enlargement, which is very, very common in the colleges, when you are doing your post-graduation.
when you were in the college, then you definitely saw these types of cases, drug induced. इससे आपको क्वेश्चन मिलता है एक. सो ड्रग्स कौन कौन सी आ जाती है? एंटी कॉन्वल्सेंट ड्रग्स जैसे कि फिनाइटोइन, योर immunosuppressant, cyclosporin A, your calcium channel blockers, nifedipine. It contains verapamil also, but not that much. Nifedipine is mainly associated with the drug-induced gingival enlargement. Right. So we'll study them in detail. Then your third one is systemic disease. Systemic disease, there is inflammation with by plaque, and there is inflammation without plaque, right? So it is of two types: inflammation with plaque, inflammation without plaque. Inflammation by plaque is divided into three types. So first one is nutritional deficiency, that is your vitamin C, right? And non-specific condition, right? Then your condition enlargement. Conditions means pregnancy and puberty. दो आ गई ना कंडीशन में. नॉन स्पेसिफिक कंडीशंस में कोई भी नॉन स्पेसिफिक कंडीशन आ गई, लेकिन कंडीशनल में आ गई आपकी प्रेगनेंसी एंड puberty, right? And inflammation without any plaque deposition may cover any granulomatous swelling or tumor, any undergoing systemic disease like sarcoidosis and all. There are gingival enlargement in sarcoidosis also. Then your neoplastic which can be benign and malignant. Then your idiopathic, that means underlying cause we are not aware of underlying cause. So if we are not aware of underlying cause, we cannot say that because what is the cause, what is the etiology. And sometimes false enlargement because of bone deposition. False means it is appearing like there is enlargement of gingiva, but it is mainly enlargement of bone. There is no underlying cause, right? Now come to your inflammatory enlargement. We have to study it in detail. Inflammatory enlargement. Inflammatory enlargement, first is your chronic enlargement. So chronic enlargement is because of some regular irritation
if there is a regular irritation present, then there is a inflammation that may be because of food lodgement, improper prosthesis, any occlusal disharmony, right? It may be any, but there is some irritant present. So there is, you can see there is inflammation which gives you deep red appearance. Deep red appearance. Deep red appearance chronic inflammation का proper एक feature है. Deep red appearance, and your gingiva will appear soft, friable, smooth, and shiny. Right. And one important feature is, suppose this is your tooth and it is covered by gingiva, then there is a enlargement over here, which is called life preserver. Life preserver shape bulge. जैसे हम रिवर राफ्टिंग का टाइम करते हैं ना, लाइफ जैकेट्स डालते हैं ऊपर से, वैसे ही ऐसा लगता है कि जिंजाइवा ने कुछ ना कुछ ऊपर से डाला हुआ है, तो लाइफ प्रिजर्वर शेप बल्ज आ जाती है उसमें. सो दिस इज द मेन फीचर ऑफ क्रॉनिक एनलार्जमेंट. क्रॉनिक एनलार्जमेंट का मतलब हो गया रेड है, जैसे हम टच करेंगे देयर इज ब्लीडिंग ऑन एनी टचिंग. इट मे बी बिकॉज ऑफ प्रोब और एनीथिंग, एनी हार्ड फूड, एनी शार्प फूड, देयर इज एनलार्जमेंट. बट एनलार्जमेंट जो है वो पेनलेस होगी. दैट्स व्हाई इट इज योर chronic, right? Now chronic enlargement is initially painless, but if there is secondary cause, then it becomes painful. Sometimes your chronic lesion will show immediate pain. पेशेंट बोलता है मुझे रात को इतनी दर्द हुई जी, मैं अगले दिन आपके पास कॉलेज में आ गया. तो दैट इज अ एक्यूट साइन, बट इट वाज क्रॉनिक लीजन. ठीक है, जैसे एंडो में होता है ना एक्यूट एक्सर्वेशन ऑफ क्रॉनिक लीजन, सो दैट इज योर फिनिक्स एब्सेस. वैसे ही अगर कोई सेकेंडरी कॉज आ जाए, देन बिकॉज ऑफ सेकेंडरी कॉज देयर इज पेन, ओके, आफ्टर द chronic lesion. So secondary cause होगा तो पेन आ जाएगी, otherwise it is painless, right? अब अगर हम बात करें gingival abscess की और periodontal abscess की, जैसे suppose this is your tooth, and ये आपका gingiva आ गया, और कहीं यहाँ पे आपके ड्रेनेज है. So if the drainage is present in the marginal gingiva, then it is your gingival abscess. And if it is present in attached gingiva, then it is your periodontal abscess. This is a differentiation on the basis of perio, but on the basis of endodontics, we have to trace the sinus. We will insert the gutta-percha stick of 25 number with 2% into it, then we'll take X-ray, and if your gutta-percha is pointing over the marginal gingiva, then it is your periodontal gingival abscess. Otherwise, if it is pointing towards the root portion, then it is periapical abscess or periodontal abscess, right? So this is again very important point. Then what are the main basic causes of chronic inflammation? Chronic inflammation. So causes are, we'll discuss basic causes also. Causes are irritants. First of all, poor
oral hygiene. This is very, very important. Poor oral hygiene. As we are taking care of uh, labor class in Baddi Dental College, so we are getting mouthful of calculus, plaque, enlargements, gingivitis, many things, right? So the poor oral hygiene is the main basic cause. Poor oral hygiene, right? And there are some irritants, local irritants, like patient is undergoing orthodontic treatment, overhanging restorations, occlusal disharmony, improper contoured restoration or improper contour formation. Because of this, there is food lodgement, and it will cause gingival enlargement or inflammation, right? Then what are the treatment options? We have to remove the underlying cause. We have to remove the underlying cause. So underlying cause is, if there is local irritation, we have to remove the irritation. And if this is because of poor oral hygiene, we have to improve the hygiene. Good oral hygiene with the help of scaling and root planning. Scaling and root planning. Then comes to your drug induced gingival enlargement. So drug induced gingival enlargement is because of, as I've already told you, because of anticonvulsant drugs, phenytoin, immunosuppressant, cyclosporin, and your calcium channel blockers, mainly nifedipine. Right. So how it looks like? Everybody knows gingival enlargement is a bead-like. It is in the interdental papilla, and it looks like a beads. Suppose this is your tooth, this is your gingiva, then you can see beads over here, beads like painless enlargement. If this is because of drugs, but if there is any secondary cause, like there is calculus, plaque deposition, then there is a pain also, right? So if it is, just remember this point, if it is because of it is normal enlargement with the underlying cause of drug, then it appears mulberry shape. Mulberry shape. And if it is because of secondary, if there are secondary causes also, then definitely there is pain. But if it is there is no pain, then first of all it looks like pale. It is not red. If there is pale मतलब फीका पीला कलर है, pale white, yellowish white सा कलर है, ठीक है, and it is of mulberry shape, right? Mulberry shape. And इंटरडेंटल पेपिला और मार्जिनल जिंजाइवा में मेनली आपको ये दिखेगा. दैट मीन्स यहाँ पे और मार्जिनल जिंजाइवा में आपको मेनली ये दिखेगा, ठीक है. इंटरडेंटल पेपिला प्लस मार्जिनल जिंजाइवा एंड मेनली प्रेजेंट ऑन द फेशियल एंड लिंगुअल सरफेसेस ऑफ द जिंजाइवा. मतलब अगर आप देखोगे तो बक्कली भी प्रेजेंट होगा और अंदर की तरफ पैलेटली भी प्रेजेंट होगा, राइट?
पैलेटली भी प्रेजेंट होगा. एंड समटाइम्स इन दिस इज if suppose this is phenantoin, and then now I'll tell you how will you differentiate it is phenantoin induced, it is cyclosporin A induced, or it is nifedipine induced. So in case of phenantoin anticonvulsant, phenantoin induced, phenantoin induced में क्या होता है, they are present mainly in younger generation, youngsters में present होगा, and this is because of increase collagen synthesis, right? So phenantoin में किस वजह से होता है, इंक्रीज कोलेजन सिंथेसिस की वजह से, एंड मेनली प्रेजेंट इन यंग जनरेशन. ठीक है. एंड phenantoin खाने की वजह से आपको फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी भी होती है. ये क्वेश्चन आ सकता है कि phenantoin खाने से क्या होता है, इंक्रीज कोलेजन सिंथेसिस, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी एंड मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया. और इनका क्वेश्चन आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव. So all of the above is answer, right? Second is your cyclosporin A. So cyclosporin A is mainly in children because we will give cyclosporin A for the immunosuppression. Immunosuppression के लिए हम देते हैं, तो mainly ये because of children, जो अपना चिल्ड्रन में होता है, क्योंकि इम्यूनोसुप्रेशन का तो बचपन में पता चल जाएगा, कोई ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसके लिए बच्चों में हम ये देते हैं. तो साइक्लोस्पोरिन इज मेनली कॉज जिंजाइवल एनलार्जमेंट इन चिल्ड्रन. दिस इज बिकॉज देयर आर मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेज 1 और 3 होते हैं जो कि जिंजाइवल इन्फ्लामेशन के टाइम आते हैं. सो देयर इज decrease in MMPs in 1 to 3, and therefore there is a inflammation because of cyclosporin. And second common point है cyclosporin का चेक करने के लिए कि cyclosporin की वजह से there is formation of new cementum, रूट पोर्शन में कहीं न्यू सीमेंटम डिपॉजिट हो जाएगा. तो इसको बचाने के लिए हम एक मेडिसिन देते हैं विच इज कॉल्ड टेक्रोलिमस, राइट. नाउ कम टू योर निफिडिपिन. निफिडिपिन किस वजह से होती है? अब एक एंजाइम होता है बॉडी में कोलेजिनेज. कोलेजिनेज क्या करता है, कोलेजन की डिस्ट्रक्शन करता है, एक्स्ट्रा कोलेजन की. तो निफिडिपिन क्या करता है, देयर इज डिक्रीज इन कोलेजिनेज एक्टिविटी, मतलब कोलेजिनेज की एक्टिविटी को वो कम करेगा. अब एक्टिविटी को कम करेगा तो दैट मींस देयर इज एक्स्ट्रा डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, दैट मींस फटाफट से कोलेजन फॉर्मेशन होती रहेगी. एज आई हैव टोल्ड यू दैट कोलेजन फॉर्मेशन इज 2 to 4 times मोर देन दैट ऑफ आपके किसी भी बॉडी के पार्ट में सबसे ज्यादा कोलेजन की फॉर्मेशन जिंजाइवा में 2 to 4 times होती है. ठीक है. सो मोर डिपोजिशन ऑफ कोलेजन हो जाएगी, मोर डिपोजिशन, राइट, because there is decrease in calcium in the fibroblast and T cells, right? So इसके लिए हम इसके साथ देते हैं मेडिसिन इसराडीपी, राइट. इन दोनों को याद रखना है, टेक्रोलिमस एंड इसराडीपिन. इस पे क्वेश्चन आ चुका है बिकॉज स्टडीज हो चुकी हैं इसके लिए. ठीक है. नाउ कम टू योर नेक्स्ट जिंजाइवल एनलार्जमेंट विच इज systemic. Now come to systemic disease. Due to systemic disease, there is enlargement.
systemic disease. As I have already told you, there is inflammation because of plaque. So in the plaque there is conditioned. Conditioned में आएगा आपका pregnancy and puberty. Right. So pregnancy में mainly आपके marginal gingiva और ट्यूमर लाइक एनलार्जमेंट हो जाएगी, जिसको हम कह देते हैं एंजियोग्रेनुलोमा। याद रखना है इसको, ये भी आता है क्वेश्चन। एंड देयर इज इंक्रीज इन पी इंटरमीडिया। बैक्टीरिया कौन सा होता है? पी इंटरमीडिया। एंड इन केस ऑफ puberty there is increase in P intermedia plus P nigricans, निग्रीसेंस और कैंस, जो भी कह सकते हो आप, ठीक है। सो कंडीशनड में तो आ गया आपके दो कंडीशंस आ गई, प्रेगनेंसी एंड पवर्टी। प्रेगनेंसी में प्री इंटरमीडिया, ये तो आता ही आता है बहुत बारी, प्री इंटरमीडिया, इंटरमीडिएट, याद रखना इंटरमीडिएट, ठीक है, इंटरमीडिया। एंड पवर्टी में पी इंटरमीडिया प्लस पी निग्रिकेंस आ जाएगा, निग्रीसेंस भी कह सकते हो आप, ठीक है। एंड then second is your nutritional deficiency, that is because of deficiency of vitamin C। विटामिन सी से आपका जो इन्फ्लामेशन होती है that is called scorbutic gums। just remember this also। ये आया तो नहीं है कहीं, बट हाँ एक न्यू टर्म है तो आ भी सकता कभी, ठीक है, कहीं आया भी हो शायद। स्कॉर्बेटिक गम्स कहते हैं विटामिन सी डेफिशिएंसी से जो गम्स इन्फ्लामेशन होती है, राइट। सो इट इज कॉल्ड स्कॉर्बेटिक गम्स। देन योर नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक आ गई आपकी कोई भी अंडरलाइंग कॉज की वजह से, एंड इन्फ्लामेशन बिकॉज ऑफ plaqueless fit, right? So let me discuss about something about pregnancy gingival enlargement। So there is hormonal increase while pregnancy which is called estrogen and progesterone। दो हॉर्मोन्स इंक्रीज होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोन। पी से प्रेगनेंसी, पी से प्रोजेस्ट्रोन। प्रोजेस्ट्रोन की तरह ही सेम नाम है एस्ट्रोजन, ठीक है। सो दिस इंक्रीज, देयर इज चेंज इन वेस्क्यूलर परमेबिलिटी। वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होगी एंड जिसकी वजह से क्या होगा, जिंजाइवल इडिमा होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड जिंजाइवल एनलार्जमेंट और इन्फ्लामेशन विच इंक्रीज द इन्फ्लामेशन, राइट। इन्फ्लामेशन इंक्रीज करेगा एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, जिसकी वजह से वेस्कुलर परमेबिलिटी इंक्रीज होगी। और इसमें दो तरह की एनलार्जमेंट होती है, मार्जिनल and second one is your tumor like। so marginal enlargement, mainly there is increase in P intermedia, ठीक है। और P intermedia है, मैं इसको एक magenta color, I don't know exactly what is magenta color but I'll try कि magenta color कुछ शायद कुछ ऐसा होता है, नहीं,
पर्पल टाइप कलर होता है मैजेंटा, मैजेंटा कलर एनलार्जमेंट हो जाती है। मार्जिनल जिंजेवा एंड मैजेंटा, मैजेंटा कलर एनलार्जमेंट होगी, ब्लूइश सी एनलार्जमेंट होगी मैजेंटा कलर, राइट। और अगर ट्यूमर लाइक की बात करें तो एंजियोग्रेनुलोमा, एंजियोग्रेनुलोमा दिखेगा आपको, बड़ी सी स्वेलिंग दिख जाएगी एक, जिसका कोई अंडरलाइंग कॉज नहीं होगा, ठीक है। अंडरलाइंग कॉज तो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, बट कोई आपको लोकल स्टिमुलस नहीं दिखेगा उसमें। इट मेनली अकर आफ्टर 3 months of pregnancy and it is again magenta और डस्की रेड, डस्की रेड और मैजेंटा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज योर प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड। देन कम टू योर पुबर्टी। पुबर्टी एसोसिएटेड में क्या होता है, प्लाक तो होगा ही होगा, मेनली ये प्रेजेंट होता है फेशियल जिंजाइवा में। एक तो पुबर्टी आपको पता लग जाएगा कौन सी एज में, ठीक है, तो फेशियल जिंजाइवा में होगा ये, ठीक है। पुबर्टी वाली एज में होगा और फेशियल जिंजाइवा में मेनली होगा। सो इसमें मेनली जो आपके अफेक्ट होते हैं वो होते हैं मार्जिनल जिंजाइवा प्लस इंटरडेंटल जिंजाइवा, ठीक है। सो इसमें मेनली आपके कौन से इंक्रीज हो गए, पी इंटरमीडिया, पी निग्रिसेंस एंड हाँ इनिशियली कैप्नो साइटोफेजा होगा। Initially this is present and lately you will get P intermedia and P nigricans, right? So these are the conditioned one, right? Then your non-specific, अब हम विटामिन सी के बारे में किसको ज्यादा नॉलेज होती है, विटामिन सी के बारे में नॉलेज होती है एमबीबीएस को, तो आपको याद रखना है एमबीबीएस, ठीक है। विटामिन सी डेफिशिएंसी जो होगी एमबीबीएस को मेनली पता होता है, तो एमबीबीएस मतलब मार्जिनल जिंजिवाइटिस, बी मतलब ब्लूइश रेड इन कलर, ब्लीडिंग गम्स, एंड एस मतलब स्मूथ सॉफ्ट एंड शाइनिंग। सो जस्ट रिमेंबर विटामिन सी की नॉलेज एमबीबीएस को ज्यादा होती है। मार्जिनल जिंजिवाइटिस, मार्जिनल जिंजाइवल इन्फ्लामेशन, ब्लूइश रेड, ब्लीडिंग गम्स, स्मूथ सॉफ्ट एंड शाइनिंग, राइट। सो प्रेगनेंसी में कौन सा था, मैजेंटा कलर, विटामिन सी में कौन सा, ब्लूइश रेड, राइट। सर मार्जिनल जिंजाइवा इसमें याद रखना, मार्जिनल जिंजाइवा इसमें और प्रेगनेंसी में दोनों में होता है, ठीक है। Then come to your plasma cell gingivitis, which is again very, very important. Plasma cell gingivitis. So plasma cell gingivitis में अटैच्ड जिंजाइवा अफेक्ट होता है। एक दो डिजीज है जिनमें अटैच जिंजाइवा अफेक्ट होता है, तो इसको आप याद रख सकते हो। अटैच जिंजाइवा मेनली प्लाज्मा सेल जिंजिवाइटिस में अफेक्ट होता है, ठीक है। दिस इज बिकॉज ऑफ एलर्जी, दिस इज बिकॉज ऑफ एलर्जी, बिकॉज ऑफ chewing gum. Some people are allergic to some kind of food. If it is present in your chewing gum, then he will or she will get enlargement because of allergy of that chewing gum. So mainly this is present in the attached gingiva. Attached gingiva again, it is red, deep red, friable, bleed, right? And it is mainly associated with
चिलाइटिस एंड ग्लोसाइटिस। चिलाइटिस पता है ना, एंगल पे होता है, ग्लोसाइटिस मतलब टंग पे होगा। तो इट इज मेनली एसोसिएटेड विद द चिलाइटिस एंड ग्लोसाइटिस, राइट। देन कम टू योर दिस इज सॉरी विटामिन सी आ गया आपका कंडीशनड में। देन आ गया, और विटामिन सी सॉरी आपका कंडीशनड में ही आएगा, नॉन स्पेसिफिक नहीं आएगा। नॉन स्पेसिफिक हो गया जिसका कुछ पता नहीं है। नॉन स्पेसिफिक एनलार्जमेंट, नॉन स्पेसिफिक एनलार्जमेंट, नॉन स्पेसिफिक एनलार्जमेंट होता है अंडरलाइंग डिजीज की वजह से, लाइक योर ल्यूकीमिया, राइट, पायोजेनिक ग्रेनुलोमा, राइट, एंड सार्कोडायसिस, वेगनर्स ग्रेनुलोमा। सो ल्यूकीमिया में भी आपका मेनली होता है एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया, AML। इसमें मेनली आपके जिंजाइवल एनलार्जमेंट होती है, एक्यूट मोनोसाइटिक ल्यूकीमिया, राइट। देन योर पाइजेनिक ग्रेनुलोमा, राइट, एंड ल्यूकीमिया में भी आपके ब्लूइश रेड होगी। और एक आपका आ जाता है वेगनर्स ग्रेनुलोमा। वेगनर्स ग्रेनुलोमा में होगा स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी जिंजाइवा, रेडिश पर्पल स्ट्रॉबेरी जिंजाइवा। स्ट्रॉबेरी जिंजाइवा का मतलब हो गया जो स्ट्रॉबेरी खाते हैं ना, उन्होंने याद रखना है कि वेगनर्स ग्रेनुलोमा में भी स्ट्रॉबेरी जिंजिवाइटिस होता है। आई थिंक हमारा सेशन खत्म हो रहा है, रीजॉइन करो दोबारा से, एवरीबॉडी प्लीज फास्ट।